inside the main function. Oh, okay, just let me delete it and write it from scratch. Okay. So start with the hello world program. Aman, I think we should wait for them to install and then we can talk about this. Okay, I was like thinking if the network may be slow, so meanwhile they can look around it. So okay, Oh, I'm yeah. gonna just wait and let you guys download. Let us ask At least them. Ask download the them. Git. Yeah. Yeah, so are the instructions clear, all of you, the participants? Do you know what to install or have you started installing it? Are you facing any issues, anything? Please let us know in the chat because that's how we'll get to know. Also, please use your laptop to attend this session because it's a hands-on workshop. You don't just have to listen, you have to do it yourself as well. Any issues? Are you all installing the links that are in the chat? I think you joined late, Rakesh. We'll send the link again. This is the Git download link for Windows. This makes your Git work very, user friendly, you can say that. And then after that, go ahead and install Flutter. Okay, so the let me give you uh, example of where Git is being used in Flutter actually. So if you know a bit about version control, Git is used in that. So imagine you're writing a piece of code today and like you did some changes and tomorrow you think like, oh, I messed up and now it's not working. Can I revert back to the day before it was? So in those scenarios, use a version control system. So you keep the track of the code, what changes were done and when were those changes done, and you can just revert and come back at that exact point to like get that version of your code. So Git helps you in that thing. So when it comes about Flutter, all the SDKs and everything, even Flutter community keeps a track of all their code, and also like it's easy to ship code like upgrades to your PC. It's easier with Git. Why it's easier? Because imagine like a Flutter community already had a version like 2.5 in your PC installed. Now they released a new version 2.10. Instead of like downloading it all again from scratch, they can just push you the changes, like the exact changes that were made. So in that case, it will be much easier for you to download that update. So which option like download? The this one, I guess this is the one for downloading Git. Okay, so you are asking about which of these things are for this. I guess this one is a 64-bit one. Most of you guys are using this thing, uh, 64-bit. So like download it, and when it's done, just double click and get it installed. So and when you are installed, just open your terminal or command prompt if you're using Windows and like do git version, and you can see something like this, then Git is probably installed in your computer then. Meanwhile, like if any one of you can eagerly want or willingly want to share your screen to help others, can any one of you like share your screen and let others know how exactly you're doing things? Yeah, please make sure that Okay. you're following so that whenever we ask you to share your screen or share your status, you are able to do that. Okay, so you are saying like you are having troubles understanding my English. I can use English. Is it allowed, Ravi sir, in the TSA meetings to be a bit speaking in Yes, Hindi? yes, yes, it is ओके okay. सो मैंने भी बोला कि लाइक अगर आप लोग में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सको, सो कोई भी विंडोज अगर जो यूज कर रहे हो लाइक स्क्रीन शेयर कर सको, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स. They can see and like see you and go ahead. And obviously, I'll be guiding you. So anyone just share your screen, please. अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
You can share your screen and then we'll help you out. इससे क्या होगा बाकी लोगों को भी Okay, समझ में Sandesh. आएगा. Okay, Ashutosh is Yeah, Ashutosh did it. Just don't worry if you do mistakes. We had done quite a lot of mistakes. yes, Obviously, a yours gonna be lot. not that much blunder. Telling you the truth, once I uninstalled all the binaries of my Linux distribution. So you can just imagine these were the most silliest mistake that I don't think anyone generally do. Okay, Sometimes so you I spend downloaded the entire Git. days. Yeah. Like open your folder. Uh, I guess press Control J to see the downloads. Yeah, so in folder. Okay, double click on that. Okay, just press next and next. So any one of you, if they are curious what they are pressing next and next, you can just read, but like the default configurations are the ones that you're mostly gonna use. So जो पहले से पड़ा हुआ है तो तुम लोग मोस्टली हम लोग भी वही यूज करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुमने इसके फास्ट फास्ट कर दिया. Okay, did he left the meeting? आशुतोष तुमने स्क्रीन शायद अपनी बंद कर दी शेयरिंग. I think he got disconnected and that is why. Okay, so someone else was also willing. Sandesh, can you do Sandesh, do that? you want to share your screen? Great. Yeah, thanks. Okay, I was like thinking to install Windows in the VM, but फिर वो हो जाता है ना VM पे तुम VM में चला रहे हो Windows और Windows के अंदर Flutter install तो ज़्यादा ही resource consuming हो जाता है. So that's why I ditched the idea. Ashutosh is back, I guess. संदेश और आशुतोष में कंपटीशन हो गया कौन स्क्रीन शेयर करेगा. Okay, don't worry. Like you saw that this is something. This is the GUI part of Git. So don't do anything. Just close it. And like open command prompt. CMD, search CMD. Okay, now type just type git git. Hit enter. Just hit enter. Okay, so see there are like quite a lot of commands that it's showing. You don't need to like go and dive in detail about these things. We can take a session like seniors had took sessions about it and we can like repeat those sessions in the upcoming time. But basically now you have Git installed. Okay, so if you see something like this, probably that means that Git is installed. And if you see something like a Git command not recognized or something like that, then assume that Git is not installed on your PC. So now you have Git installed. Like go back to the chat section of the meeting, Asutosh. Is it Asutosh who is sharing the screen? Yeah. Go to the chat where I shared you the link for. Okay, okay. Wait, I'm sending you again the link. Don't worry. Just visit this link. Okay, so guys, just follow in order. First install Git and then move ahead. So see, I didn't how I knew that Git is being required.
So see on the screen, to install and run Flutter, your development environment must meet these minimum requirements. So these things the Flutter community itself recommends. The first is the operating system, Windows 7 or later, okay, that most of you guys are using. Then the disk space is 1.64 GBs or above, okay, and then the tools. It said Windows PowerShell and Git. So PowerShell is already installed and like you have Git. Okay, just download this link. Uh, Flutter Windows stable zip. It's gonna take a while, so it's quite a big file actually. So okay, meanwhile, just scroll to the bottom part of the screen. Asutosh, at the same page, yeah, just scroll down. Go ahead, more bottom. Okay, so just a second. Okay, meanwhile, you guys just repeat the same thing. It is downloaded here. Let me resume by say like tell you scroll. You just start that thing and let it download. Okay. So if I go here, there is for like if you want to develop for Android, so first you have to install Android Studio. Okay. For that thing, like the last link that I said in the chat, go ahead and scroll down. Here you can see these things. And like click on this link and it's gonna start downloading like Android Studio for your distribution. Just press the download Android Studio button here and you can have these for your distributions. Okay, just do these things and let it download. So if you're using on Android, like let me make Sandesh share screen again. Sandesh, just share your screen again. I think Ashutosh is already sharing. We can. Okay, just a second. I wasn't able to see the screen. Okay, Asutosh, go to the section where you download Android Studio. Just scroll down to bottom part of the page. Okay, let it download. Just go to the same page that you are visiting right now. The third tab of your browser. Yeah, scroll down. Okay, scroll up a bit where the Android Studio part was there. Scroll up a bit. More up. Okay, more up. Okay, so see. Okay, just wait. See, there is download and install Android Studio. Click on that. Okay, so see here the download Android Studio button. Click it. Accept it. I guess you guys had done the Android facilitator thing. So some of you might have Android Studio installed. That's a good thing for you. So see, like these things are two things are being downloaded. So if some of you are having problems with like bandwidth, you don't guys have like enough megabytes of data to download these things, like download in your spare time if you wish, but just put a close attention here, how he is like setting up the path and all. So you can do it later on. Will Android Studio run on 4 GB RAM? Okay, okay. So Android Studio is known for like how much it hates computer usually. So I'm just letting you guys download Android Studio to like download the Android SDK and the virtual device AVD. That's what I'm going to use Android Studio. For the most part of Flutter, we're going to use VS Code, Visual Studio Code for coding. So these two things are just to install all about Flutter. It's not you're going to be working in Android Studio a lot. So there is not a big problem here for all of you who are using 4 GB RAM laptop.
I can like bear the pain even in the 8 gigs RAM of laptop. So required 891 megabytes, but data is limit, so I will download. Okay, leave it. I'm just telling you, whoever can download, just download it. Okay, so since Ashutosh like had downloaded Flutter SDK, so go ahead, show in folder, click on that. Okay, and like extract it to any folder you wish to keep it in, like probably in any C drive. Uh, Let me see. I can't properly see your screen. That's why I'm having trouble. Wait. Just right, just Meanwhile, right Ranisa, click. can you help him like extract those files to any Yeah, folder? yeah. Just go to that folder, Ashutosh. No, no, just the back of this. The place where it was downloaded. Yeah, right click on that. Do you see extract all? Go to that. Choose the location where you want it to be. Is it necessarily C drive, Aman? No, you can like keep it anywhere. Yeah. It should probably work. But C is like good to have because You can have it in D as well because when C drive gets you know completely filled okay, up. okay. Yeah. You don't need to toggle any of this. Just see in the bottom part, you have to select folder Yeah, button. yeah. Just select folder. See in the bottom screen, not there in the tab itself. थोड़ा सा और जाओ right में. Here. Uh, The थोड़ा और place नीचे. where you have your local disk D. Select folder. हाँ, yeah, that's it. Right. Now extract. Is it being done? Oh, not responding. वो system heavy हो गया होगा. Okay, now it's happening. Yeah, so just Windows stuff. Hmm. Yeah, it happens. So most of us have already switched to some other operating system. Let it be. Let it happen completely. Yeah, so I can like clearly see the pain of the computer that's handling so much stuff. It is downloading something in the background, extracting a file, and at the same time, sharing their screen to the whole audience. Others, are you doing it? Ashutosh and Sandesh are actively doing it. What about others? Are you installing it? Are you facing any issues? ओके लैंग्वेज लेवल चलो हम लोग ना एक कोशिश करते हैं हिंदी में ही बात चलो करते हैं हिंदी सो में ही वो करो. सही रहेगा Yes, absolutely. बट तुम लोग थोड़े थोड़े अडॉप्ट कर लो लैंग्वेज को cause हाँ. बाहर की जितने कम्युनिटीज जाओगे वहां पे सिर्फ तुम्हें इंडियंस तो मिलेंगे नहीं तो तुमको तो फिर बोलना ही पड़ेगा उनकी लैंग्वेज तो बोल नहीं सकते सो कॉमन इंग्लिश ही रह जाता है सो Hmm. एक्सट्रैक्ट हो जाए तो बता देना फिर आगे कुछ और भी स्टेप्स है Sandesh, are you installing it? Are you following the steps? तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी डाउनलोड हो गया आई गेस Hmm.
ओके सो हम लोगों पे थोड़ा गुस्सा मत करना। सो व्हेन यू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हें अभी एसडीके भी डाउनलोड करना है एंड्रॉइड का एंड द एमुलेटर टू, सो इट्स गोना बी मोर देन लाइक 1 or 2 gigs of more data. I hope you're connected to a proper Wi-Fi service. Once you do it, it's just, you keep building your application. So let me tell you one interesting stuff. जो तो Flutter है installation में थोड़ा सा time लगता है, but when you start like building apps with Flutter, so it's really a piece of cake. तो तुम्हें उतने ही fast builds मिलेंगे, like बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे. नेट चाहिए तो लाइब्रेरी आ जाओ या Yeah, that works. या Sandesh, that's fine. Um, Yeah, press OK. Yeah, let Android but make Studio sure you do it. open Make sure you itself. do it. You can just skip this first step. Don't send if you wish to. Then press next. Then press next again. Okay, so these are the files that's gonna be downloaded. So press next and it's gonna start downloading it again. Okay, so accept it. Like scroll to the bottom. I guess there is one more checkbox. So there is it's happening. Can you like full screen it? I guess it is downloading things in the background itself. Wait, go to the previous screen. Just there is a button on the previous. Okay. Do one more previous step. Okay, go ahead next. Then next again. I guess it's being downloaded. Can anyone confirm the same thing happening? Okay, one thing someone said, like please provide video how to install these things. That's gonna be a much more efficient way, I guess. Cause like most of you guys are having trouble with internet and all. So see, I'm pasting a YouTube link here in the chat. Okay, everyone just visit it. So it's the installation guide for Windows. संदेश शायद कर रहा है कोशिश, उससे कुछ आ रहे हैं एरर्स एंड ऑल। मेरे को भी नहीं पता चल रहा है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा। सो एनीवेज लाइक मैंने ना लिंक भेज दिया चैट में। इस यूट्यूब वीडियो पे अगर तुम लोग जाके देखोगे तो तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा हाउ टू प्रॉपरली इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो लाइक रन योर फर्स्ट ऐप। सो कैन यू ओपन द चैट रियल क्विक? या प्रेस दिस लिंक एंड ओपन इट। सो ज्यादा लंबा है भी नहीं, 8 मिनट का वीडियो। इट हैड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ओके सो हेलो। या दैट्स इट, लाइक इससे तुम लोगों का हो जाएगा। फॉर कोई तुम लोगों में से कोई भी लिनक्स चला रहा है? एनीवन? Can anyone confirm that they're using Linux? So I'm going to tell you how easy it is to install Flutter in your studio there.
Robert, are you there? Yeah, so if you guys not have shifted to Linux, just start shifting to Linux. It's way cooler and easier to install. So in simple terms, if you want to install Flutter, so that's all you will do. So probably this is the thing, and you enter your computer password, and it gonna install Flutter in your computer. As easy as that. Since I've already installed, so this will do the thing. So if you're installing in Windows, you have to like set path and everything. But if when you're using Linux distribution, mostly it comes pre-installed with Git. You just need to like download uh, the Flutter, and like for Android Studio, you can just run one another command, and it's gonna like do all the stuff for you. So let it be. I'm assuming that that video is enough to like let you guys run Flutter itself. So I'm gonna like give you how exactly you can like run your own Flutter app. So for here, I'm gonna use Visual Studio Code. Since like most of you guys already told me like Android Studio like heats up your PC and you have 4 GB of RAM and all. So हम लोग यहाँ पे ना Visual Studio Code यूज करेंगे, and since like Visual Studio Code हर एक डेवलपर्स कभी ना कभी लाइफ में यूज करेंगे, and like most of the times तुम लोगों को ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा like यूज करने में other than like other things. So यहाँ पे अगर तुम Control Shift P प्रेस करोगे, you can like search, create new. Wait a second. मेरे को ये बंद कर लेने दो, प्रोजेक्ट दूसरा खुला हुआ है. ओके, लेव इट. मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ. हाँ, तुम लोगों को लग रहा है मैंने क्या किया, कुछ किया तो नथिंग फैंसी. मैंने बस एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर मैंने फ्लटर को खोला है. सी अगर जैसे तुम फ्लटर कोई भी फोल्डर के अंदर फ्लटर खोलोगे एंड लाइक व्हेन यू गो टू वीएस कोड, सो यहाँ पे तुम फ्लटर सर्च करना एक्सटेंशंस में एंड डाउनलोड द एक्सटेंशंस फॉर फ्लटर. सो जो पहला वाला होगा लाइक द मोस्ट डाउनलोड्स, इसको इंस्टॉल कर लेना. अगर तुम लोग विजुअल स्टूडियो शायद मेरे को लग रहा है हर कोई यूज कर ही रहोगे पहले से, नहीं कर रहे हो तो डाउनलोड कर लेना, ये भी फ्री है. और एक बार गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा. ओके, दो यू कैन ऑल्सो यूज एंड्रॉइड स्टूडियो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग ये यूज करो. वो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना, वहां से ये फ्लटर एक्सटेंशंस इस जगह से सर्च करके डाउनलोड कर लेना. Now what you will do is press Control Shift P and then search new. Okay, so here ये suggest कर रहा है Flutter new project. Okay, if I press enter here, so ये मेरे को कुछ कुछ options दे रहा है कि मेरे को like मैं क्या क्या बना सकता हूँ Flutter से. एक तो normal Flutter applications बन सकते हैं, दूसरा modules बन सकते हैं like generate a project to add a Flutter module to existing Android और iOS application. So तुम्हारे पहले से Android के apps बने होंगे, तुम उनमें कुछ Flutter से बनाए पार्ट्स को ऐड कर सकते हो. पैकेजेस आर लाइक बेसिकली तुम ऐसे कोड जनरेट करोगे जो दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. तो हमें एप्लीकेशन सिंपली बनाना है. वी गोना क्लिक एप्लीकेशन. सो ये मेरे से पूछेगा मैं कौन से लोकेशन में बनाना चाह रहा हूँ. सो दिस इज द लोकेशन जो मैंने अभी क्रिएट किया था फोल्डर. इफ आई सेलेक्ट इट, मेरे को ये पूछ रहे नाम के लिए. सो मैं काउंटर ऐप सिंपली अगर इसको नाम दूं and if I hit enter, so it will just generate the code for me itself. So तुम्हें हर बारी जब भी कुछ नया ऐप बनाना पड़ेगा तुम यही करने वाले हो. So this is what you will do. Okay, so ये एक सिंपल से तुम्हारे लिए ऐप बन जाएगा. So अगर तुम्हें रन कराना है, you can see here like press, and जो तुम्हारा emulators होंगे वो यहाँ पे दिखने लगेंगे. If you just press it and it gonna just run that app for you. तो मैं तुम्हें बस दिखा दे रहा हूँ ऐप कैसा होता है, और थोड़ा बहुत इसके बाद हम लोग डार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे. डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फ्लटर में यूज हो रही है वो कैसे वर्क कर रही है.
सो पहले ये रन हो जाए फिर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। सो जितने भी कमेंट्स है ऑब्वियसली तुम उनको डिलीट कर सकते हो, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। सो अनलाइक मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे भी अगर दो बैकस्लैश से स्टार्ट करोगे, सो दिस इज हाउ लाइक कमेंट्स आर मेड इन फ्लटर। दिस इज नथिंग फैंसी, मैं इसको इसलिए कमेंट्स को हटा दे रहा हूँ क्योंकि लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कोड है, बट द कोड इज क्वाइट स्मॉल। इट्स समवन शेयरिंग स्क्रीन। तुम लोग माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो if you wish to। I think Aman Raj from 21 batch is sharing. Same name. Okay, listen, Aman, you can like get your things downloaded off the grid. मैंने तुम्हें steps बता दिए, like for now let's just see my screen, फिर कर लेना तुम लोग। मैंने वो वीडियो प्रोवाइड किया है, तो विंडोज पे इजीली वहां से तुम लोग कर सकते हो डाउनलोड। एंड फॉर लाइक मैक गाइस जस्ट सर्च इट, यूट्यूब पे कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा। एंड मैं तो बोलूंगा ना, तुम लोग साइट पे जाओ फ्लटर के, वहां से तुम्हें खुद स्टेप्स मिल जाएंगे, वहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। सो अगर मैं कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल से स्टेप्स किए, तो दिस इज व्हाट आई गेट। एंड बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज लाइक द सिंपल सैम्पल ऐप जो हर बारी तुम बनाओगे, इसके बाद ही इसके ऊपर कुछ और बनाओगे, लाइक यू गोना मेक चेंजेस एंड मेक समथिंग इनक्रेडिबल जो तुम्हारा मन कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट द स्टेप। तुम विजुअल स्टूडियो खोलना, यहाँ से एक्सटेंशंस पे जाके फ्लटर सर्च करना। ओके, फर्स्ट टाइम तुम्हें एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे, जस्ट डाउनलोड द एक्सटेंशंस। एंड व्हेन you're डन, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी एंड लाइक सर्च न्यू। तुम्हें एक फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट करके कमांड दिखेगा, उस पर क्लिक करना एंड एप्लीकेशन, एंड लाइक तुम्हें ये लोकेशन सेलेक्ट करना है। इफ आई सेलेक्ट दिस लोकेशन एंड द ऐप का नेम एंड एंटर, सो इट विल जनरेट द ऐप फॉर यू। सो पहला ऐप तुम्हारा ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, सिंपल सा। तो अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे ना कोड में चेंजेस करके कि कुछ कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यू हैव पुश दिस बटन मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे मैं कुछ कस्टम अपना टेक्स्ट डालता हूँ, समथिंग, सो इट चेंजेस हियर। तो मेरे को थोड़ा बहुत तुम्हें ना आइडिया लग जाएगा ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। सो दिस इज लाइक बेसिक से सिंपलेस्ट फ्लटर ऐप कैसे दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो सेशंस होगा ना, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ऊपर वाले टेक्स्ट क्या है, ये बटन कैसे है, मैंने बटन दबाया तो ये कैसे चेंज हुआ, एंड लाइक अगर मेरे को कुछ कुछ और डालना है बीच में तो वो मैं कैसे डालूंगा। सो वो थोड़ा सा नेक्स्ट वाले लाइक सेशंस में डील कर लेंगे हम लोग। बट अगर अभी भी देखे ना हम लोग कुछ कुछ कोड को अगर अच्छे से देखो, तो थोड़ा थोड़ा सेंस ये मैच करेगा। सो बेसिकली सी, तो सबसे पहले ना एक स्कैफोल्ड होता है। सो स्कैफोल्ड इज लाइक बेसिकली अ पेज ऑफ योर ऐप। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. Yes, sir. सो सी, जो स्कैफोल्ड होता है ना तुम्हारा, बस अभी सिंपल लिखना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, सारी चीज ऑटो जनरेट होती है, तुम्हें खुद से लिखना भी नहीं है सारा चीज। सो स्कैफोल्ड इज बेसिकली लाइक द पेज ऑफ योर ऐप। सो ऐप बार से तुम्हें क्या लग रहा है? सो ऐप बार इज दिस पार्ट, ऊपर वाला, एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ टेक्स्ट है, ये विजेट का जो टाइटल है ये, एंड दिस द बॉडी, बॉडी इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। सो बॉडी के अंदर सेंटर टैग यूज किया गया, जैसे अनलाइक तुम सीएसएस में सेंटर करने के लिए परेशान हो रहे होते हो, तो तुम्हें फ्लटर में उतनी परेशानी नहीं होगी, तो बस तुम सेंटर टैग यूज करोगे। ये विजेट है, एक्चुअली टैग नहीं बोलने चाहिए। तो इसके अंदर जो भी डालोगे वो सेंटर्ड हो जाएगा स्क्रीन पे। सो सेंटर के अंदर एक कॉलम है, कॉलम क्या करता है, जो भी चीजें होते हैं ना एक के बाद दूसरे रखे जाता है। सो लाइक एक के ऊपर दूसरा। सो सी, जैसे यहाँ पे है ना, एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, सो दैट्स व्हाट कॉलम के अंदर के जो भी होते हैं चिल्ड्रन वैसा होता है। तो ये इसका अलाइनमेंट है सेंटर। सो बेसिकली जो भी इसके अंदर तुम डालोगे वो कॉलम वाइज ना वो सेंटर में रहेगा, ठीक। तो इसके अंदर एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है, चिल्ड्रन मतलब इसके अंदर तुम मल्टीपल विजिट्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, समथिंग लिखा हुआ, फिर यहाँ पे ये एक इंटीजर काउंटर है पड़ा हुआ, ये दैट्स इट। एंड ये तो बॉडी में होता है, एंड इन सब के ऊपर में एक ये बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो तुम्हें एक स्कैफोल्ड में एक ही बार तुम यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट। सो अगर यहाँ पे देखो आइकन्स डॉट प्लस है, मैं कुछ और कर सकता हूँ,
icons dot minimize, so probably ये change हो जाना चाहिए. या सो दैट्स इट. सो ये सिंपल सा तुम लोग इतना काम करके थोड़ा बहुत इसके साथ टिंकर करना है. ऑब्वियसली कुछ एरर हुआ तो तुम्हारा पीसी ब्लास्ट नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है. थोड़ा बहुत अगर छेड़छाड़ करोगे कोड के साथ, देख के छेड़छाड़ करो थोड़ा सा, एंड लाइक सेव इट एंड सी द करेंट चेंजेस, समथिंग लाइक दिस. ऐसे कुछ मैंने किया, सेव एंड लाइक इस तरह करके मैं देख सकता हूँ इसको. ओके, चलो जैसे दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग. लाइक जब हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो एक फंक्शन रन हो रहा है. ओके, फंक्शन इसको मेथड बोलेंगे. इफ वी गो टू दिस, यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, जब भी हो रहा है क्लिक कर रहे हैं तो काउंटर जो उसको प्लस प्लस कर रहा है. मैं यहाँ पे इसको प्लस इज इक्वल्स टू 10 कर दूंगा तो ये इसको 10 से बढ़ाएगा 25, 35. सो ऐसे कुछ कुछ चीजें तुम लोग एक्सप्लोर करना, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा. मीन वाइल लाइक मैं इसको बंद करके थोड़ा सा डार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिंस वी यूज डार्ट इन आवर फ्लटर प्रोजेक्ट्स. सो सबसे सिंपली, अगर इवन इफ तुम लोग ना अभी फ्लटर तुमने इंस्टॉल नहीं किया, जस्ट विजिट दिस साइट dartpad.dev, एंड यहाँ पे तुम अपने डार्ट कोड को रन करा सकते हो. सो ऑब्वियसली टू लाइक रन एनी फाइल हम लोग एक मेन फंक्शन लेते हैं. सो void इज द रिटर्न टाइप यहाँ पे. सो इससे कुछ और रिटर्न नहीं कराना है हमें, तो void लिखा हमने मेन फंक्शन, एंड दैट्स इट. इसके अंदर हमें कुछ प्रिंट कराना है तो हम लोग प्रिंट लिखते हैं, एंड करली ब्रेसेस के अंदर कोई स्ट्रिंग, सिंपली एज इट. एंड इसके अंदर सेमी कॉलन यूज होता है जस्ट लाइक सी एंड C++. सो इफ वी सी, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड. सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि तुम्हें अब प्रिंट कराना है इंटीजर्स को, सो जस्ट लाइक C++ में या फिर जावा में तुम जिस तरह करते हो, इंट a इज इक्वल्स टू 10. फिर अगर तुम्हें स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना है तो स्ट्रिंग b इज इक्वल्स टू हेलो, ऐसे कुछ. एंड नाउ यू कैन जस्ट प्रिंट a एंड b here. प्रिंट a, तो यहाँ पे 10 दिख जाएगा. अगर तुम्हें b प्रिंट करोगे तो हेलो दिख जाएगा. सो बेसिकली दिस इज हाउ यू असाइन वेरिएबल्स इन डार्ट. सो अगर अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो थोड़ा बहुत लाइक करो कोड, तो थोड़ा बहुत तुम्हें भी समझ में आने लगेगा. हाँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग को एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आ रहे होंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में बाकी चीजें. ओके, सो दीज आर द सिंपल थिंग्स. अगर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में जाए तो वो करके देखते हैं. ओके, सो इफ अगर हम लोग यहाँ पे a रखा हुआ है, ठीक ना, अगर a इज ग्रेटर देन 15 मान लो, देन वी कैन रन सम स्टेटमेंट. अगर ऐसा नहीं है तो else we can run some another statement. If a is greater than 15, so I can print a is greater. Okay, obviously don't forget the semicolons. और Aman, अगर ऐसा नहीं है, that is हाँ, lesser. A is lesser than 15. okay, sorry. I was just going with the flow, so I missed it. So and b is less than something. Okay, so put the semicolon and remove it. Since now a is 10 and if a is less than 15, so obviously this will be printed. So let's run it. मैंने स्टेटमेंट कुछ उल्टा पुल्टा लिखा, तो इस पे ध्यान मत दो. बस ये देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाली चीजें रन करेंगी, अगर नहीं होगा तो ये वाली चीजें रन करेंगी. अब चलो इफ एल्स तो हो गया. अगर तुम्हें एल्स इफ करना है, मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स करते हैं जो एल्स इफ, एंड यहाँ पे अगर तुम लिख दोगे इफ a इज इक्वल्स टू 10, तो तुम यहाँ पे रन कर सकते हो, लाइक प्रिंट कर सकते हो इट इज इक्वल. ओके, तो अभी क्या तुम लोग, चलो मैं गेस करने को तुम लोग को देता हूँ. बताओ अभी कंसोल में क्या प्रिंट होने वाला है. कैन यू गाइज लाइक मेक अ गेस इन द चैट. Let me see a bit of your understanding about coding in general. We can't write code from scratch. Are you talking about Dart? So you can just turn on your mic and ask if you wish to. There is no such shame in asking any question here. जिसने लिखा था ये क्वेश्चन, मैं नाम नहीं पढ़ पाया.
Okay, A is greater. If we can't write A is greater, yeah, that's totally fine. चलो अगर हम यहाँ पे ना ऐसा कुछ करते हैं, लेस देन 15 है, सो यहाँ पे अगर हम लोग 20 कर देते हैं, सो Hello. हाँ, जस्ट से हाँ, कुछ बोल रहे हो तुम लोगों में से कुछ कोई? Himanshu, do you want to ask any question? No, ma'am. Okay. डोंट बी शाय, और लाइक डरो मत, पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये बेसिक इफ एल्स कंडीशन है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया ना, थोड़ा सा लाइक कुछ भी नहीं है, देखते देखते हो जाएगा। चलो एक सिंपल सा फॉर लूप चला के देख लेते हैं। सो फॉर लूप जस्ट लाइक सी प्लस प्लस में जैसे तुम करते हो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे मैं आई को प्रिंट अगर करूँ, तो तुम ही लोग देखो क्या होने वाला है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, आई को 0 से इनिशियलाइज किया एंड फिर कंडीशंस चेक कर रहे हैं। इफ जब तक ना आई 10 से लेस है, तब तक हम लोग आई प्लस प्लस करेंगे, मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। सो इट गोना प्रिंट मी फ्रॉम 1 to 9। सो दिस इज लाइक फॉर लूप। एक वाइल कर सकते हैं हम, वाइल। चलो पहले एक इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 9। ओके, वाइल ए इज greater than 9, a is greater than 1। ओके, प्रिंट करा देते हैं ए को, प्रिंट करा देते हैं ए को, एंड फिर ए को माइनस माइनस करा देते हैं। ओके, सो सी वाइल ये क्या कर रहा है, पहले ए की वैल्यू चेक कर रहा है। जब तक ए की वैल्यू 1 से लाइक बड़ी है, इट इज प्रिंटिंग इट एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग इट। सो फर्स्ट रन में ये क्या करेगा, चेक इफ ए की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी, 9 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली इट इज। तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा 9 को, एंड देन फिर 9 की वैल्यू को 1 से घटाएगा 8। देन नेक्स्ट राउंड पे ये ऐसे होगा। सो दिस बेसिकली वाइल लूप ऐसे काम करता है। तो मैंने इफ स्टेटमेंट बता दिया, प्रिंट स्टेटमेंट बता दिया, एंड क्या छूट रहा है कुछ स्पेशल? हाँ, एक चीज तुम लोग देख सकते हो, लाइक अगर तुम्हें जैसे डेटा टाइप पता है इंट स्ट्रिंग, तो तुम लिख देते हो। अब यू माइट बी कंफ्यूजिंग कितने डेटा टाइप है डार्ट में, मैं क्या यूज कर सकता हूँ। सो यू कैन ऑलवेज लाइक गूगल इट, उनके पूरे का पूरे डॉक्यूमेंटेशन में दिया पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें लग रहा है कंफ्यूजिंग कि मेरे को नहीं पता है कौन सी यूज करनी है, तो यू कैन जस्ट यूज var and it's gonna do the same thing। okay, so var is like something, ये ऑटोमेटिकली रन टाइम पे तुम्हारा ये रन टाइम नहीं, सॉरी, कंपाइल टाइम पे तुम्हारा ना ये इसको असाइन कर देता है वैल्यू। इट्स स्टिल जब जैसे तुम्हारी वैल्यू होगा ना, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। सो यहाँ पे uh, ये x जो इंटीजर ही है, इफ यू कैन सी। सो var इज लाइक मोर गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, अगर तुम्हें लिखना नहीं है इंट हर चीज के लिए स्पेसिफिकली इंट एंड ऑल। सो एक चीज और तुम्हें इंटरेस्टिंग दिखा दो, डार्ट में एक लिस्ट होता है लाइक पाइथन। सो इसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, 1 2 3। ओके, एंड नाउ यू कैन जस्ट प्रिंट इसके पूरा का पूरा, तुम पहले x को प्रिंट कर सकते हो। सो बेसिकली ये लिस्ट है एक अनदर डेटा टाइप दैट इज इन डार्ट, जस्ट लाइक पाइथन में जैसे। तो ये पूरा को प्रिंट कर देगा, और तुम्हें इसका पहला एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो जस्ट लाइक जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं हम लोग। तो x जीरो करोगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। सो इफ आई डू x2, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, because ये 0 1 2 ये सेकंड टूथ पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू लाइक अगर हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं जनरल प्रोग्रामिंग में। सो बेसिकली ये एक डेटा टाइप है, और ज्यादा कुछ तो है नहीं। तुम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए जितने मैंने लिंक्स दिए हैं, उनसे तुम फ्लटर इंस्टॉल कर लेना। जो मैंने काउंटर ऐप बताया, वो काउंटर ऐप प्रैक्टिस कर लेना, लाइक देख लेना चला के। मीन मैं तुम्हें I'm just giving you a link. Can you guys see me that you can access it? Just confirm me.
I'm a Linux user because you are using a phone. Yeah, obviously phone uses Linux kernel. So just check this link if you can visit this Dart lab. Can you see this lab? You can just do two labs here. That will be good to go. You don't need to do all of it. Yes, Just sure. confirm me the link that you can access it and you I can do can the lab. I can access it. I'm waiting for the others to respond. Yep. Can you just start one and see if it's actually and it isn't asking for any credits? I'm hoping that it's not going to ask for any credits. 1 second. It might ask. First, I think we all need to sign in using our Google account. Okay. And Uh, I uh, guess Ravi said it's asking for a credit in each of these things. what do you mean by credit? Something they provide Google like to access each of these labs. Oh, I see. But I think there was this something like Google Cloud Lab, right? Which was accessible by all. Is it the same thing or is So it they different? were giving the free thing in that, but I'm sure like it isn't here with Flutter. I think it was available. Someone told me that we can do the labs just the way we did it. 1 second. Can you share your I screen? Yeah, sure. So I'm stopping it. पैसा so बाकी तुम लोग सारे इंस्टॉल करके रखना it will be a great thing to do. Introduction to Dart, and it's just 1 hour 30 minutes. Mm, Before, I think there are no credits required for this because it's not Can you mentioned. start it and see? Let's see. I'm not a robot. Of course, I'm not a robot. I am. Oh, It's asking for some tokens. I guess we have to check with the team of yeah. the Flutter campaign. Yeah, Uh, meanwhile, like, don't worry about it. You just go with the basic installation and run the counter app. In the next session, as we have planned, we're gonna like explain you the basics. अरे बहुत पैसे छोड़ दो जो बेसिक्स होते हैं कि कैसे विजेट्स जो तुमको कुछ अगर बनाना हो तो तुम कैसे पोजीशंस करोगे कोई बटन कहाँ पे कैसे जाएगा कोई टेक्स्ट फील्ड्स कोई इमेजेस वो कैसे कैसे तुम सेट करोगे अपने जगह पे वो नेक्स्ट वाले सेशन दैट इज परसों वो एक्सप्लेन करेंगे मीनवाइल तुम लोग फ्लटर को इंस्टॉल कर लो एंड्रॉइड स्टूडियो कर लो जो वीडियोस मैंने दिए एंड जो मैंने काउंटर ऐप बनाया था ना तुम लोग कोशिश करो वो कहीं भी तुम सर्च करोगे ना इंस्टॉलेशन वो पहला रन करवाएंगे तो जस्ट वो कर लो yeah, so today was like another introductory hands-on workshop. मतलब इस इवेंट के बाद अगर आपका मतलब इंस्टॉल वगैरह नहीं हो पाया है तो आप लोग खुद से बैठ के आराम से ट्राई कर लेना जितने भी चीजें आज बताई गई हैं उन सारे को इंस्टॉल करने का और काउंटर ऐप तक पहुंच जाना मतलब आई एम जस्ट रिपीटिंग अमन बट उसके बाद जो नेक्स्ट सेशंस है वो 16th 19th और 21st को है so we'll try to help you build your own Flutter app using in all these sessions. So make sure you sign up for these sessions, and I provided the link in the chat. Just go to that link and you'll see all the events there. Just go to all the 3 events after this and sign up for that. I'll show you how to sign up. I या think some of you were just having share your trouble. screen and Ravisa like Yeah. show them how to RSVP. Yeah. So you said it right, Himanshu. Even sometimes I just mistakenly am not able to solve the captcha. Okay, And there is so a Chrome extension that can do the same. can you see the link in the chat? gdsccommunity.dev on which I'm pointing. Can you see my screen Yep. first of all? Yeah, Yeah. okay. So you just need to click on this link. You see this page. This is your college का Google Developer Students Club page, ठीक है?
इसमें नीचे जाओ। अभी हमारा ये वाला इवेंट चल रहा है March 14, 2022 फ्लटर फेस्टिवल इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लटर एंड बिल्डिंग अ काउंटर एप्लीकेशन। यही हमने आज किया। वी इंस्टॉल फ्लटर एंड वी बिल्ट अ काउंटर एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट है ये 3, लर्निंग बेसिक विजेट्स एंड लेआउट्स ऑफ फ्लटर March 16। March 19 we have navigation in Flutter application and March 21st we have making API calls in a Flutter application। ठीक है। आपको साइन अप कैसे करना है? Just go to the event। This is the event, just go to view details and all you need to do is a little scroll here। यहाँ पे RSVP का बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे बस RSVP पे क्लिक कर देना। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। Just submit। So now you see this RSVP confirmed। Now when you need to join the event on 16th, यही वाले इवेंट पेज पे वापस आ जाना, जहां से मैं जो लिंक दिया गया है ना उस पे वापस आ जाना और इवेंट पे क्लिक करके यहाँ ज्वाइन वर्चुअल इवेंट कर देना। ठीक है। ज्वाइन वर्चुअल इवेंट से यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द मीट लिंक। दैट्स इट। इजी एंड सिंपल। चलो आई एम गोना टेक एनी क्वेश्चंस। अगर कुछ भी क्वेश्चंस तुम लोगों के हैं तो यू कैन जस्ट आस्क एनीथिंग इन जनरल। अभी जितने इंस्टॉलेशन कुछ भी इन जनरल भी अगर कुछ क्वेश्चंस है ना related to just programming and stuff, you can just ask. We have to visit the website every time to check schedule for further sessions. Are there any WhatsApp or Telegram group for this? So basically जो तुमने website देखा that's specifically made for this purpose. तो उसको bookmark करके रख लो link को। So that's the thing that will help you. Himanshu, whenever we make a new event, whenever we create a new event, you will get an email. If you are a chapter member and if you sign up, you always get an email for a new event. So let's say I create a new event for Flutter and you are a chapter member. You'll get an email that there's a new event, please sign up for that. Should I show you how to be the chapter member? You can, so I guess everyone gonna see if they have missed out. Okay, I have shown this पहले also, but let me show you again. कर लो फिर से। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई भी डाउट है ना तुम लोगों के पास इन जनरल, कुछ भी इन सेंस ऑफ फ्लटर लाइक प्रोग्रामिंग, कुछ भी पूछ सकते हो अभी। My link is not getting updated on Discord. I guess Ravi can tell this. क्या? या Discord because पे लिंक Discord नहीं पे है। पता नहीं, Discord पे मुझे ऐसा कुछ फायदा लग नहीं रहा था वहां अपडेट करने का। अच्छा ठीक है। इफ यू वांट कि वी वांट टू बी, यू वांट कि मतलब सारा नोटिफिकेशन डिस्कॉर्ड पे जाए, तो हम लोग डिस्कॉर्ड पे डाल देंगे। ये जो लिंक है ना इस पे जाओ और see, I am getting this message, you have been a member of this since August 16, leave chapter। ठीक है। So I am already a member। If you're not a member, you'll see a button over here to join chapter। Okay, that is how you join the chapter and that is how you'll get the notifications of every event through email। And yes, we'll try to update Discord from now on। Thank you so much for that feedback। So I'm assuming you guys have no doubts. अच्छा, मीनवाइल मैं सोच रहा था जितने फर्दर एप्स बनेंगे ना जो हम लोग कर रहे होंगे सेशंस में, उनको एक रेपोजिटरी बना के रख देंगे एंड आई लेट यू गाइस, तुम अपने जो भी एप्स बनाओगे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ उस पर पुल रिक्वेस्ट रेज कर लेना। सो इन द वे यू कैन लर्न अबाउट इट एंड थोड़ा बहुत वर्जन कंट्रोल का भी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को डाउट। वी कैन टीच यू along the way if you get confused. Yes। Okay, so that is it for today, I guess. I hope See you you all all liked day the after session। tomorrow. Yeah, I hope you all Yeah. liked the session and we'll see you day after tomorrow on 16th and the subsequent sessions। Thank you so much for joining। Boycott Windows. Yep.